Assalamu alaikum, everyone. This is Danish Khalil, hosting this session today with COO of Utopia Deals, Farhan Huda. Farhan Huda is rich experience in the IT industry specifically. He's a fast graduate from Karachi, settled in Canada. Um, Farhan is one of the founding pillars of Utopia and is currently heading the operations, obviously, and is one of the core essential part of the team expanding Utopia where it is today since the very beginning. So thank you, Farhan Bhai, of accepting my invite for this podcast, and thank you for being here. Welcome you here. Assalamu alaikum. Thanks, for inviting Danish. Walaikum Salam. How are you? I'm good, good, good. Thank you. Alright, so हमारा जो topic है आज it's how Utopia deals scaled up to become a nine-figure mega empire successfully on Amazon. Since many of you have heard about this name Utopia since the very beginning, जब से पाकिस्तान में Amazon की अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने इसको समझना सीखना शुरू किया है, तो यूटोपिया का नाम हमेशा बड़ा कॉमन रहा है और इसका एक बेंचमार्क लोगों के लिए हमेशा रहा है, मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, जिस लेवल का भी सेलर हो. सो इट्स ऑलवेज बीन वेरी कॉमन कि यूटोपिया सेलर है, पाकिस्तानी सेलर है, बड़ी एग्जांपल्स दी जाती हैं. हमारे सामने आज बैठे हैं फरहान हुदा जो कि COO है यूटोपिया में और ये हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे. पहले तो फरहान भाई आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, आपका बैकग्राउंड, आप क्या करते हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में, and how you became a part of Utopia Deals, and since then how you're taking things forward here since the very beginning. Because I have a lot of questions for you, but inshallah हम इसको uh, with the flow लेके चलेंगे. So over to you. Chal again, thank you for inviting me. So, मेरी journey. I'm a software graduate, as you mentioned. Then I moved to Canada in 2003. Started working for a few software companies, climbed up the corporate ladder. 2010, 2011, I started my own software consulting company, doing some consultancy for different banks. Basically, my experience at that time was data analytics and big data solutions. 2014, around 2014, a good friend of mine who's CEO of Utopia asked me to help expanding or launching new products, right? So between 2014 and 2016, I was kind of doing consulting or part-time with Utopia, helping bringing in more products, setting up Utopia Karachi office as well. We opened our first office in 2015, started hiring over there as well. And in 2016 January, when my daughter was born, then I decided, okay, I'm gonna do it full time because I had the leverage to work from home and yeah. So that's where the full time or like I came on board fully. So from then, my main role in the beginning was expanding the product lines at that time. You were, I think, part of for a few years Utopia as well, when we were expanding the kitchen product line, home and kitchen product line, and then scaling up the company on the strength level as well, and on the revenue side as well. So earlier 2016, 2018 mainly focused on the product management. 2017 we started, or we thought about diversifying within Amazon. So we started Amazon Canada, Amazon UK, Amazon Europe. At that time, Europe was pan EU, so we were just delivering in UK. So for a couple of years between 2017 2019, me and my team focused on Canada and Europe and supported US as well in the expansion. But from the ground up, we set up Canada, UK, and Europe, um, and then established. Alhamdulillah, Canada is doing over 40 million US dollar revenue from the current rate. Europe is over 100 million revenue at the current rate USD. Um, and then in 2019, 2020, we merged all the product teams. I was looking after the supply chain as well. Started looking after HR as well, both on the product division and the production division, because we were having some challenges over the hiring over there,
2019, 2020, we started production or like expanding our production. We were doing production of towels initially in Karachi, but we were sourcing mainly our other products from China, like comforter pillows, bed sheets, and plastic products and cast iron. So from 2019, 2020 onwards, we started manufacturing those products in Karachi as well. And then I got involved on the production side as well. So yeah, since then I'm involved all across the company, as you mentioned, in bringing in new product, expanding, creating new product revenues or revenue streams for the company. As probably people know, Utopia is an umbrella organization, which means we have multiple companies. Utopia Deals is basically an e-commerce company focused towards selling on US, Canada, Europe, globally. Utopia Industries is focusing towards the manufacturing. And then we have Utopia Fulfillment, which is a logistics company, which is focused towards warehousing and fleet management and delivery from in and out from the port to the warehouse and from warehouse to Amazon and to the customer D2C as well for our B2B orders. So that's in summary overall. Great. Great. Quite brief, I would say. Thank you. Uh, I was also part of Utopia Deals and started off my career in this e-commerce from Utopia way back in 2016. And obviously, Farhan bhai was my very first mentor in this. तो जो कुछ मेजरली सीखा अमेजोन पे वो फरहान भाई ने ही सिखाया इनिशियल लेवल पे एंड देन वी took over things from there for the kitchen brand and Farhan bhai moved to different projects. So Utopia Deals का नाम लोग सुनते हैं कहते हैं बहुत बड़ा नाम है $1 million कंपनी है बिलियंस का बिजनेस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज बन गई यूटोपिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बन गई और उसके बाद तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे चल गई इसको कहते हैं अनदर लेवल चले गए अनदर लैंडस्केप आपने अचीव कर लिया सो यूटोपिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो बना फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस स्टार्ट करी पूरा वर्टिकल सेटअप डाला सो अब यूटोपिया एक वो बन चुका है या वो जाइंट बन चुका है जिसको compete करना आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मैनी अदर थिंग्स इस एक्सपेंशन में सबसे मुश्किल काम होता है टीम बिल्डिंग करना और आप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं थ्रू आउट सो इतनी अच्छी टीम कैसे बिल्ड करी कैसे मेंटेन रखा क्वालिटी को इन टर्म्स ऑफ कि भाई अच्छी टीम है रहे रिसोर्सेज को कैसे आपने जैलिन रखा अच्छी उनको कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स दिए अच्छे पैकेजेस पे लोगों को हायर किया सो ये चीज़ कैसे मैनेज कर पाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिकॉज व्हेन आई ज्वाइन आई वाज आई थिंक द फोर्थ और फिफ्थ एम्प्लॉय और जब मैंने छोड़ा तो 120 150 पे उस वक्त ही पहुंच चुके थे वो भी मतलब उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुई थी सो कैसे आपने टीम को एक्सपेंड किया कैसे बिल्ड किया और आप अगर हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहें कि इतने बड़े सेटअप को चलाना और उसमें टीम बिल्डिंग को कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है ये कैसे मैनेज कर पाए आप ठीक है मैं उस पर आता हूँ तो आई थिंक यू आर इन द टॉप 10 एम्प्लॉइज आई वाज नंबर फोर्थ देयर वाज अनदर वन बिफोर मी आफ्टर obviously the co-CEOs or co-owners and then there were a few. So yeah, start May. So we went struggle of every startup, right? So people need to understand that we didn't go traditional way. We set up our selling leg first, and then we set up our manufacturing, right? Usually people have their product. I'm talking about the manufacturing industry in a way. तो उसमें ये था कि in the beginning we were looking for top talent from the top companies, companies with the marketing programs or business management program like IBA, LUMS, NAD graduates, right? So or for software development, FAST and related GIK and other universities, where were the top talent of Pakistan. There were again pros and cons of that as well. When we obviously people who have who are smart, and they have good education, they have higher ambition as well. So when we hired them after 6 months, 12 of them, although we gave them good packages and promoted them earlier as well, but they were ambitious and it's good to have. So they went for further education to different countries, or they wanted to move forward, try different things. So there were a higher turnaround, although we had a good talent and we were managing it well. But in the first I would say 20 hire or 20
30 hires, we had a good turnaround. So then we started doing a mix of it. We hired people with 3 4 5 years of experience with a similar field. Obviously it was hard to find the experience. Initially we were just looking for people with the marketing or digital marketing experience, and at that time back in 2015 2016 when we started hiring in Karachi, the talent was not there. I mean, I won't say people were not talented. People were talented, but that skill was not there. So then we decided, okay, we'll hire the people who have right positive mindset, good education, good background, and we'll train them. So it took us like good 3 6 months, or it still takes whoever joins us, even with the experience, it takes a 3 to 6 months understanding the DNA. I call it DNA of Utopia. Even if we hire a manager or DGM now, I tell them on first day that okay, you are hired because you are expert in your field, but you are in Utopia now. We have a way of doing things. There's a DNA of Utopia. You need to understand. It will take you 3 2 months to 6 months. Don't need to worry about it. We will guide you around there, and just learn along the way, and then you'll be successful. So those were the challenges. Again, scaling up, we learned along the way as well. We had a few challenges on the product side when we hired, but we picked up really quickly. When we started hiring on the production side, we were having more challenges. Although manufacturing, I would say, setup is, so there were different challenges. On the product side, the talent was, the skill set was not there, but on the production side, the skill set was there, but the norm of doing things, or the way we were trying to do, because we were trying to bring in a lot of new technologies, importing machineries, and trying to implement, I would say, the best practices which are implemented either in North America or mostly in China, to do the lean manufacturing, and reducing the B grade, increasing the quality and whatnot. So over there we had few iterations, and then eventually we found a recipe, and now when we hire, we kind of have a very strict SOP, filtering, for those profiles, and then a very tedious and rigid interview process. And after that, obviously somebody selected, then obviously they are more set up for success. All right. And so just to obviously motivate the audience, यूटोपिया इस वक्त collectively क्या number कर रहा है in terms of revenues? Where do In, you in where terms do of you revenue, अगर सिर्फ आउट ऑफ पाकिस्तान की बात करें, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, तो वी आर टॉप 20 एक्सपोर्टर. आई थिंक आवर yeah, करंट रनिंग, मैं रन रेट की बात करूंगा जो लास्ट मंथ ओवर मंथ चल रहा है, उससे 12 मंथ की बात करें तो ओवर 200 यूएस मिलियन एक्सपोर्ट्स चल रही हैं. yeah. अगर सिर्फ यूएस के अमेजोन की के रेवेन्यू की बात करें, तो फॉर द लास्ट 12 months is over 400 US million dollars. Europe, UK, Europe combined is over 100, and Canada alone is over 40, and those are all USD million dollars. So combined revenue, you can easily say 550 for the Utopia deals, 200 plus for Utopia Industries, and 2025 for fulfillment. Wow. 750 800 global, you can say. Yeah. So, guys, you are watching it, and whoever will listen this podcast later on, this is really a motivation. ये सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, obviously कोई अच्छी चीज़ दिखाने के लिए या सक्सेस स्टोरी के तौर पे नहीं है. इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत सारी एफर्ट्स हैं, डेफिनेटली राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बिकॉज जिस तरह ये स्टार्ट हुआ, आज ये वहाँ नहीं है. तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि आज अगर मैं यूटोपिया की सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट कर रहा हूँ या यूटोपिया के नंबर्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लोग समझते हैं कि हम भी 1 साल में यूटोपिया बन जाएंगे या 2 साल में यूटोपिया बन जाएंगे, या हमें बनना ही यूटोपिया है. तो Yes, sir. लोगों की बेंच मार्किंग बड़ी खराब है हमारे यहाँ, तो दैट्स वेरी बिग कंसर्न. सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूटोपिया ने री इंजीनियर्ड करने की कोशिश की है, विच इज़ नॉट ईजी. तो मेहनत लगती है हर चीज़ के पीछे, और आज जो हम नंबर सुन रहे हैं, ऑब्वियसली ये नंबर्स अचीव करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स हैं अगेन. सो बैक टू माय, लाइक अभी आपने यूटोपिया इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, इसकी एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया. एक बड़ा चैलेंज है जो कि लोगों ने फेस किया, हम भी फेस करते हैं, व्हेन वी सोर्स गुड्स फ्रॉम चाइना. तो यूटोपिया 2017-18 तक आई बिलीव चाइना से ही सोर्स करता था, कुछ चीज़ें पाकिस्तान से 2019 बनती थी, बट नाउ
मेजरली यूटोपिया इंडस्ट्रीज खुद सब कुछ बना रहा है. सो ये शिफ्ट जो मेजर आया, इसका मेन रीजन क्या था कि आपने क्यों चाइना को छोड़ा और क्यों आपने सोचा कि अब पाकिस्तान में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? व्हाट वाज द मेन कॉज, मेन रीजन फॉर दिस? मल्टीपल रीजंस थे. अगर मैं उसको क्विकली समराइज करूं, एक तो विजन ऑफ द सीईओ, राइट? सो द विजन इज ऑलवेज that giving back to the community, giving back to the country, creating more jobs, right? And at the same time, obviously, it's a business, so there were some business benefits over there as well. One of the drivers, I would say, and that was blessing in disguise before COVID, because that's what helped us survive during COVID. Because before COVID, we made those investments and initiatives, and we were producing and basically doing supply chain through Pakistan. China से जो लोग कर रहे थे during COVID, they were stuck, their inventory were stuck and whatnot. One of the major challenge, if you realize, and you were there, that 26, 17, 18, what Amazon was doing, they started launching their own white label, and Yeah. obviously they had the data, right? It's all about data driven decisions. So they looked into the companies, 3PLs, companies like us who were doing good, they were best sellers. They started going to their suppliers or related suppliers, and launching their products in the same categories, obviously with the bigger inventories, and giving better price point. So they were competing really hard, right? And so basically, if you are manufacturing from China or sourcing from China, either with the same vendor, Amazon is sourcing as well, and 10 times they will get a better price, and they can offer better price uh, to the customers. So that was the challenge. So 111 was that main driver. So then we started thinking, okay, how to keep control. Then on the China side, if you are a bigger manufacturer, and your supplier is manufacturing for 4 or 5 bigger vendors, then obviously your priority is not that high. Sometimes obviously they're busy with for other customers, and then you will not have that kind of supply chain or inventory level, because probably you're aware it's very important to keep your inventory levels rolling. Once you have a bestseller or you have organic ranking, you have to keep bringing in inventory and keep selling to maintain that as well. If you go stock out for a few weeks or not, then your organic ranking will start going down, and somebody will come and take over your bestseller and whatnot. So multiple reasons. One was giving back to the community, country, creating more jobs, having control of the quality, and the inventories, manufacturing, and basically bringing in innovation at our own hand, because that was another challenge that when we were working with Chinese supplier, we were recommending them, okay, try this, try that, and obviously they are not. I would say they respond to change, and they adopt, but it's very slower. Anybody and everybody can say that if you are doing your own self, the innovation, then obviously you can try things quickly, and adopt quickly as well. So those were the main reasons that we started manufacturing, and we had initial setup like towels were. Then when we started, it was towels, right? And those were manufactured in Karachi. So we had an idea, and then expansion from there. Obviously, there were different challenges for that. Like we do microfiber. There are very few companies who does microfiber. We are doing plastic products. The quality of products, plastic product we are doing cast iron now. I think it's rare doing cast iron in Pakistan. So things like that. Were challenging, and we were importing, we still importing like machineries from China, reverse engineering them, understanding them, and we have a whole department doing machine manufacturing, right? So we are doing machine ourselves as well. So ये सारी चीजें, and that's the bigger driver where there is quality, innovation, creating more job, and basically scaling up quickly. अमेजिंग. सो ये ऑब्वियसली इतना बड़ा सेटअप रन करना इज नॉट दैट इजी, और सुनने में ये चीज़ बहुत आसान लगती है, बट नाउ व्हेन वी सी लिंक्डइन, वी सी यूटोपिया इंडस्ट्रीज की ओपनिंग्स, वी सी ऑन वेरी रेगुलर एंड यूजुअल बेसिस. So this is again a very great achievement. Obviously kudos to the team and to the CEO and the vision obviously. क्योंकि पाकिस्तान में एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अलग जनरेट हो रही है,
Yeah. प्लस हम इन हाउस बना रहे हैं सब कुछ, दैट्स इट, दैट इटसेल्फ इज चैलेंजिंग, प्लस ये प्राउड मोमेंट भी है हमारे लिए क्योंकि हम हर चीज पे चार्टेड होते हैं ना। हम I see. खुद, मैं 2017 से ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ, सो आई हैव बीन टीचिंग पीपल के अली बाबा से सोर्स कर लो, चाइना से सोर्स कर लो, बिकॉज हम पाकिस्तान में यूजुअली रिकमेंड ही नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान इतनी चीजें ही नहीं बनाता ना, I हमें see. भरोसा है। तो Yeah. ट्रस्ट फैक्टर भी है कि यार ये चीज पाकिस्तान में बन सकती है, हम घबराते हैं, डरते हैं, हम कहते हैं यार चाइना से बनवा लो, क्वालिटी नहीं मिलेगी यहाँ से या वो चीज नहीं मिलेगी। तो ओब्वियसली वो एक एक स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं जिसको ब्रेक करने की कोशिश की गई, और बिल्कुल। आप लोगों ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज किया और कर रहे हैं। आई बिलीव के वेरी सून विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स, इंशाल्लाह। which is definitely will be a big achievement, और in a very short span of time। तो ये एक बहुत बड़ा आई वुड से मार्का है जो आप लोग इसको अचीव करते हैं To माशाल्लाह, add तो to जबरदस्त your बात point, I would like to add, and है। that's obviously for the motivation of the people watching, that apart from me and the two corners, all the good talent we have is in Pakistan. So let it be Yes, manufacturing, supply chain, product management, HR. So I mean, if they can do it, anybody can do it. Obviously, you start to crawl first, then you walk, then you run. So you need to understand that it will take time. But if yeah, if you define your milestone, have end goal in mind, and again, end goal could be a moving target as well, right? There's a famous saying that tip of one mountain is the bottom of another mountain, right? So yeah. it's fun is in the journey. Just keep hustling, keep define breaking your problems into smaller problems, achieving those, and yeah, keep moving forward. ग्रेट। फरहान भाई, हम लोग ऑब्वियसली ट्रेन करते हैं और इतने अरसे से सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को। ऑब्वियसली व्हेन आई वेंट आउट ऑफ यूटोपिया, आई गेट इनटू दिस फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्विसेज एंड ऑल। सो इतने सारे लोग प्राइवेट लेबल लॉन्चेस करते हैं, अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, और यूटोपिया एक मेजर एस्पिरेशन और बेंचमार्क है, सब बनना चाहते हैं यूटोपिया। Hmm. तो बहुत बड़ा चैलेंज इन्वेस्टमेंट्स का आता है, I कैश see. बर्निंग का आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो अमेजोन पे मार्केटिंग है, विच इज पीपीसी, विच वी से, जो अमेजोन पे हम पीपीसी रन करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं। I see. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ यूटोपिया, तो मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आप और जबरान भाई, सारे लोग जो है वो बड़ा फोकस करते थे इमेजेस के ऊपर। I see. बहुत ज़्यादा हमारी ग्राफ़िक्स टीम के साथ बड़ा डिटेल्ड काम करवाया जाता था, बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट करी जाती थी, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस थी, वैल्यू थी, कि Obviously. इमेज को अभी भी होता होगा डेफ़िनेटली। सो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, इमेज की जितनी साइंस को समझा गया, सोचा गया, मैं शायद वहीं पे सीखा मैंने, उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा, ना इतना डिटेल ओरिएंटेड देखा। सो इसके अलावा व्हाट आर द फैक्टर्स डू यू थिंक जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सक्सेसफुल लॉन्च में? यूटोपिया अगर आज भी सक्सेसफुल लॉन्चेस करता है, आई डोंट वांट ऑब्वियसली, मैं नहीं चाहता कि आप पूरी स्ट्रेटेजी शेयर कर दें, Yeah. बट द मेजर पॉइंट अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को कि फेलियर के कॉमन रीजंस आपने क्या ऑब्जर्व करे किसी प्राइवेट लेवल फ्रेश लॉन्च में, और क्या मेन रीजन है जिसकी बेसिस पे आप अपनी लॉन्च को कामयाब कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? किन चीजों पे बड़ा एसेंशियली फोकस करना चाहिए जो भी प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाहता है, ब्रांड लॉन्च करना चाहता है अमेजोन पे? इमेजेस का मैं क्विकली बता देता हूँ, फिर मैं दूसरे सवाल पे भी आता हूँ, वो थोड़ा लंबा आंसर होगा उसका। इमेजेस का तो मेरे ख्याल में सेइंग जो दिख ऑनलाइन, खासतौर पे ई कॉमर्स, जो दिखता है वो बिकता है, राइट? सो इट्स अगेन इट्स अ पर्सपेक्टिव. द प्रोडक्ट इज नॉट एट द हैंड ऑफ द कस्टमर. What you show them now, it's a video marketing as well, so from the pictures and the video, what they see, and then obviously your reviews and price point. That's why more focus on what you're showing, because that's your show and tell. When you go to Walmart, you take your product in your hand, you're feeling it and you're watching it as well. Online, you're just seeing it, so it's pictures and videos. That's why the focus is there and still there. In generic, for a success of a product launch, multiple steps hai, और हर step important है. From your product hunting is very important. Product selection, जिसमें जिसे कहा जाता है, या फिर आप कह लो कि research what product you want to launch, right? How the criteria to do that. Obviously, earlier days, 2014, 2016, it was different, right? Now a lot of people are selling, like if you search comforter or knife or any USB charger, you will see hundreds and hundreds of product, right? But everybody knows, on if you're not on the first page, then you're not, I mean,
That's the goal, to get on the first page and then get on the first three lines after the search, and basically eventually take the bestseller, and then keep the bestseller, because that's the Yeah. challenge too. Keep the- तो जब आप प्रोडक्ट पहला अगर पहले इसको डिवाइड किया जाए, तो फर्स्ट एरिया इज प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लॉन्चेस, टू स्टिल सीइंग वेदर यू वांट टू गो फॉर द मासेस, एनी प्रोडक्ट यू वांट टू सेलेक्ट जो हर घर की ज़रूरत होती है, या you want to do a niche, right? For somebody who's launching first time, and have a limited budget, I'll still say go for the product which you do, which हर घर की जिसकी ज़रूरत होती है, masses will target or buy, right? क्योंकि अगर niche products में आप जाते हैं, तो again you will need more funds, and you will need more expertise, and it has a higher risk. सो हर चीज़ के एडवांटेज, हायर द रिस्क, हायर द पेन, हायर द गेन, तो उसमें नीश में वो है। इसमें ये है कि रिस्क कम है, आपके पास एक टैम होता है, या टैम टर्म यूज होता है कि आपकी कितनी बड़ी मार्केट है उसकी। तो कंफर्टर की बहुत बड़ी मार्केट है एज कम्पेयर टू आप स्पेसिफिक किसी आई डोंट नो आई लैशेस की बात कर लें, या कोई स्पेसिफिक एक नीश प्रोडक्ट ले लें, उसकी कम कम बड़ी मार्केट है। तो ऑब्वियसली आपके बायर बायर पूल ज़्यादा है। फिर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पॉइंट की, अगेन आपकी अफोर्डेबिलिटी, आप किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो है कस्टमर अमेजोन पे बाई करता है। तो वो रेंज है बिटवीन $30 and $50 जो है, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बिकती है। तो उसके लिए आप उसको बैक ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट $3 to $5 होनी चाहिए, ताकि उसके बाद आप जब लैंडिंग कॉस्ट हो, और फिर आपकी FBA फीस लगे एंड ऑल दैट डिलीवरी, तो फिर आपको कुछ प्रॉफिट भी हो उसमें। And then main selection of product, that what functionality, what problem you're trying to solve. So basically, again, customer review, customer feedback, uh, उस product की functionality क्या है, और उससे आप क्या, what you're trying to solve, और उसका यूएसपी क्या है। यूएसपी का मकसद ये है कि जैसे बहुत सारे लोग नाइफ सेल कर रहे हैं, आप भी नाइफ सेल करना शुरू कर दें, you will have a hard time. You will have to bring in knife with some added feature or added USP now. Past में, as I said, 2014 2016 में भी copy pasting similar product launch करने से chances फिर भी थे कि successful हो जाते थे. Now you will have to add some USP to it. So product selection के बाद उसकी packaging भी बड़ी important है. You need to understand the way Amazon deal with the sizes, and the if you're doing, obviously I'm डिस्कसिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप FBA कर रहे हो, राइट? तो अमेजोन के पास रखवा रहे हो, उनसे शिप करवा रहे हो, तो पैकेजिंग, कौन सी पैकेजिंग आपके लिए मोस्टली कॉस्ट इफेक्टिव होती है, डिलीवरी में भी, स्टोरेज में भी, ताकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी कॉस्ट मिनिमम रखनी है लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में, अप टू द डिलीवरी, ताकि आप वो बेनिफिट कस्टमर को दे सको, अपनी प्रोडक्ट मोस्टली अट्रैक्टिव बना सको. So product selection, quality of the product, what problem you're trying to solve, then packaging and the delivery or shipping of that product, bringing in to your marketplace, whether it's Europe or UK, US or Canada, uh, and then it comes to the delivery mechanism, and the marketing of the product. जहाँ पे obviously उसकी expertise आती है, उसकी marketing की काफ़ी strategies हैं, and that at the launch time as well. Amazon की अपनी जो marketing, as you mentioned, PPC, that or another related marketing on Amazon, you still need to do even if you're bestseller. Because that's I say, even if you're bestseller and number one on organic, you stop your marketing, your rank will start going down, because that's how the Amazon system is. That's basically cost of doing it Amazon. So what's our area? And then the customer feedback, I mean, that's anywhere and everywhere, whether it's retail or online. Customer feedback is very important. The saying customer is always right is for a reason, right? So अगर 10 कस्टमर कोई चीज़ कह रहे हैं, ठीक है, एक दो हो सकता है कि वो कोई उसके अपनी पर्सनल उसका कोई कोई रीज़न हो, लेकिन अगर मल्टीपल फीडबैक सिमिलर आपके इश्यूज पे आ रहे हैं, पैकेजिंग पे या क्वालिटी पे, रंग फेड हो रहा है, या आपकी नाइफ है तो वो रस्टेड हो रही है, थिंग्स लाइक दैट, तो देन यू हैव टू फिक्स इट, एंड यू हैव टू फिक्स इट वेरी क्विकली. तो सक्सेस अगेन फोकस भी हो, ऐसा भी नहीं कि एक साथ 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 या 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, उस पर फोकस करके एवरी जो एस्पेक्ट ऑफ इट है, उसकी सिलेक्शन, उसकी डिलीवरी, एंड उसकी पैकेजिंग, एंड उसकी मार्केटिंग. और ये काम पार्ट टाइम नहीं हो सकता. That's very important. Anybody, my friends, my family, they ask for suggestion, I say money तो लगेगी, that's given, you have to invest money is anybody and everybody needs to do, but yourself, who's the entrepreneur or launching that product,
should spend 12, 14 hours every day for next 6 to 12 months. Keep it 12 months at least. जब आपने उसके इनिशिएटिव के साथ जस्टिस किया होगा, then you can decide after 12 months whether where I am successful or not. ग्रेट। तो फरहान भाई, एक और मेरा इसी के साथ कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये पर्सपेक्टिव मैं लोगों को दूं कि बड़ा ब्रांड कैसे सोचता है, बड़े ठीक। ब्रांड के जो बड़े दिमाग होते हैं, बिग हेड्स होते हैं, वो कैसे सोचते हैं। सो बहुत से लोग, ऑब्वियसली हम इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, मतलब हर लेवल के लोगों से डील करते हैं, खास तौर पे जब ब्रांड बनाना होता है। तो एवरेज एक प्रोडक्ट को रन करने के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, और आइडियली क्या रिटर्न्स आज के वक्त में हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए अगर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं या किसी XYZ पे डिपेंडेंट हैं, तो हम क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट बजट एक्सपेक्ट करें, एंड एवरेज एवरेज रिटर्न्स या ROIs हमारे क्या होने चाहिए आज देखिए, के वक्त में 2023 इन्वेस्टमेंट जो में। है वो काफ़ी रिलेटिव है, डिपेंडिंग योर प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। आप हम्म। फ्राइंग पैन भी कर सकते हैं और आप एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर जो आपको कॉस्ट, लेट्स चाइना से ले रहे हैं, तो पर यूनिट आपको शायद 25-30 डॉलर का मिलेगा, तो ऑफली इन्वेस्टमेंट आपकी डिफरेंट होगी। और अगर आप फ्राइंग पैन कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो शायद $3.5 $5 USD की बात कर रहा हूँ, तो हम्म। उसमें मिल जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो उसको एक फार्मूला की बात की जा सकती है कि फार्मूला ये है कि आपने लेट्स से देखना है कि आपका बेस्ट सेलर कितने सेल कर रहा है। तो लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट पिक कर ली, लेट्स नॉट नेम इट, एनी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट कर ली कि भाई इसकी डिमांड भी है, इसमें अभी भी कैपेसिटी है कि आई कैन कैन कम इन एंड लॉन्च माई प्रोडक्ट। फिर आपके टूल्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं कि बेस्ट सेलर पर डे कितने सेल कर रहे हैं। लेट्स से फॉर द आर्गुमेंट से कहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट पिक की जो कि 100 यूनिट्स पर डे कर रही है, राइट? On the very first 3 months, 6 months, you cannot target 100 units. Maybe you can do 10% of it, right? 10 to 15% of it. You need to have realistic targets as well. कि आपने फर्स्ट 3 to 6 months में आपने कंसिडर किया कि आप 10-15 यूनिट्स तक जाएंगे, एंड मैक्सिमम आप 1 साल या 2 साल में आपने टारगेट रख लिया कि आप 40-50 यूनिट्स तक चले जाएंगे। तो आपका लेट्स से एवरेज यूनिट आया साल का 30 यूनिट्स, राइट? कंबाइन मिला के कॉस्ट आपकी समझें फॉर द आर्गुमेंट से $5 है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें या लैंडेड कॉस्ट कह लें कि यूएस में आने के बाद वो $5 है। तो 30 यूनिट्स एवरेज मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, साल की इन्वेंट्री आप रखें जहन में, मल्टीप्लाई बाय $5। ये तो आपकी सिर्फ लैंडेड प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, ठीक है? अब आप उसका एवरेज रखेंगे, लाइट से आप उसको 29.99 में सेल करते हैं, तो उसमें जो FBA फीस है, आपकी रेफरल फीस है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट है, 15% रेफरल फी है वो आपने माइनस कर दी। आपकी FBA फी है वो डिपेंडिंग ऑन योर साइज एंड वेट है, वो 20-25% आपने माइनस कर दी। तो देन यू विल हैव अ नंबर, एंड अगेन यू नीड टू प्लान इन अ वे दैट कि इनिशियली आपके पास 90 डे की इन्वेंट्री, लेट्स आपने 30 यूनिट्स पर डे करना है, 90 डे 100 डे कर लें उसको, तो आपके पास कितने हो गए? 3000 यूनिट्स हो, जो भी उसकी कॉस्ट है आप निकाल लें। लेकिन वो बैकअप में अपने पास अनदर 6 मंथ्स की आप इन्वेंट्री रेडी रखें, इन लाइन रखें, बिकॉज अगेन वंस यू स्टार्ट पिकिंग इट अप, डूइंग मार्केटिंग, स्पेंडिंग मनी, एंड देन योर प्रोडक्ट स्टार्ट पिकिंग अप, the one thing you need to make sure that you don't get stocked out, right? So and then you need to have a strategy in a way, let's say आपकी जल्दी पिकअप हो जाती है, आपने मार्केटिंग की, कूपन लगाए, डील की, और आपकी बिल्कुल एक्सप्लोर कर गई प्रोडक्ट, राइट? इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। देन यू कैन नॉट वेट कि वो पानी से आ रही है, आपने उसको बाय एयर भी शिप करना पड़ेगा, उसकी एडिशनल कॉस्ट होगी। बट फॉर द फर्स्ट ईयर डोंट थिंक अबाउट मेकिंग मनी। Basically your money is what your it's not like a liquid money, it's converting into your asset, which is reviews and the product ranking you are getting for that product. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपने बड़ा जबरदस्त कह दिया कि आपकी जो पैसे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू डिफरेंट शेप ऑफ एन एसेट, और वो लोगों के शेप ध्यान में ये होता है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे हैं, डॉलर है, बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंट assets type, right? So your reviews are your asset, your ranking are your assets as well, so they are converted. It's like energy होती है आपकी, solar energy, kinetic energy, वो convert होती है एक दूसरे में, but they are still form of energy, so it's still यस, form of your yeah, liquid asset here, or assets here. एग्जैक्टली। Since you guys have grown to another level, तो of
एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इतना बड़ा नंबर अचीव करते हो, एम्प्लॉयमेंट आपकी एक बड़े शिफ्ट पे जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को मेंटेन करना, कॉर्पोरेट लेवल गवर्नेंस को मेंटेन करना, एथिकल नॉर्म्स मेंटेन करना, पॉलिसीज को इंस्टिल करना कंपनीज के अंदर, ये कैसा चैलेंज होता है और इसको कैसे यूटोपिया ने काबू रखा और उसको मेंटेन रखा? कुछ तो देखिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, राइट? आई मीन समटाइम यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, राइट? सो एज यू मेंशन, जबरान भी हो, मैं भी, और the other people in top tier, we have worked in other corporations, so we know those best practices. So started वहाँ से, लेकिन cultural change भी होते हैं that we learned when we started hiring locally. तो cultural जो हमें challenges आए या जो हमने observe किए, then we started producing processes around that. आपकी HR बहुत important है. In Utopia, within Utopia, we call HR brain of the company, and जो हमारी product management की है वो heart of the company है, and obviously manufacturing भी जो है वो arms and legs है, जो कि पूरा आपको manufacture करके दे रही है. तो you have to have a very good professional HR processes, आपके आपके SOPs, the way we have built the company or scaled up, के again you need to keep in mind के companies के एसेट दो होते हैं. एसेट वो आपकी रिसोर्सेज होती हैं, दैट कुड बी योर प्रोडक्ट एज वेल, एंड दैट कुड बी योर टीम resources, right? So that combined processes and your product and your team, that's our company's asset. किसी एक रिसोर्स पे नहीं चलती. द वे वी हैव सेट इट अप कि अगर मैं भी चला जाऊं तो देयर शुड बी हार्डली एनी change. So you need to be first at the leadership level, very much settled कि कोई जॉब सिक्योरिटी का इशू नहीं हो. जी कल्चरल हमने पाकिस्तान में ये देखा है. तो whoever we hired, first we gave them peace of mind कि don't worry about that. Once you are in, we fully trust you. We hired you because you have a skill. We trained you. Now you have the full empowerment of your role to run the show with our these boundaries, these SOPs, these processes, क्योंकि वो रखना भी बहुत ज़रूरी है. And at the same time, giving team confidence, keep giving them training. Like me, myself, and company as well, are firm believer that keep training people, regardless. Again, there was a story that the two CEOs were talking, and one was saying that you're training them, what if they leave, right? The other said, okay, if I don't train them, then what if they stay, right? So we are kind of a second mindset, right? Keep training them, keep growing their career as well, and at the same time, keep environment friendly and fun as well. ओके, ऑडियंस में तो अभी हमारे पास किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट एनी ऑफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग अस लाइव एट द मोमेंट. एक सिंगल मोमेंट में इस वक्त हमें काफ़ी लोग देख रहे हैं. सो कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है फरहान भाई से या मुझसे, रिलेटेड टू एनीथिंग, अमेजोन, पीएल, ब्रांडिंग, किस तरह से चीज़ें बिल्ड की जाए, टीम बिल्डिंग कैसे की जाए. एक टीम बिल्डिंग के हवाले से बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि बड़ा चैलेंज है सिंस सर्विसेज इंडस्ट्री में लोग टीम को एक रिटेन करना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सब अपने अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं और हर ऐसे कोई अपने आप को फ्रीलांसर कह रहा है. तो कोई फ्रीलांसिंग में $500, $1000, $800, $300 कमा रहा होता है, तो उसको टीम का पार्ट बनाना और उसको फिर टीम में जेल इन करना, फिर रिटेन रखना इज अगेन अ चैलेंज. सो ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इस वक्त फेस करते हैं. सो यूटोपिया ने कभी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक कोई ऐसी जिसमें पार्टिसिपेट किया हो और यूटोपिया एज अ ब्रांड उधर रिप्रेजेंट किया हो, ऐसे कोई अभी तक फोरम पे यूटोपिया गया है जो गोरे करते रहते हैं अराउंड द ग्लोब? एज एग्जीबिटर की अगर आप बात करें, एज एग्जीबिटर नहीं किया. वी हैव अटेंडेड लाइक अ लॉट ऑफ trade shows, right? In China, in Germany, in US, in Dubai. I think you were sent to Dubai as well for one of the exhibitions as well. But we haven't done as an exhibitor as well. One of my target this year is basically we are expanding in another dimension that we have been asked from the retailers, bigger retailers, to do basically white label.
like the Chinese companies does, right? So we have been approached by a lot of buyers to manufacture for them. So one of the expansion or revenue stream I'm working on is basically uh, to create another business for the export, non-e-commerce export, right? So for that, we are hiring sales manager globally as well. We have a sale or business development team locally as well. And then we have plans that then we will attend those shows as an exhibitor, where we'll show our show and tell our products, and basically expand on the non e-commerce or retail market as well. अमेजिंग, अमेजिंग। पहले यूटोपिया की टीम जो है वो एज अ बायर जाती थी, अब यूटोपिया की टीम एज अ मैन्युफैक्चरर Manufacturing, एग्जिबिट करेगी, हेमटेक्स एंड द कैंटोन फेयर एंड ऑल। because the major challenge, it's a good problem to have, we have, is that is the manufacturing capacity. Although we are kind of have a capacity of around 400 containers per month, we have a saying that even if you manufacture 600 800 containers, we will sell it quickly. So it's all about the increasing the manufacturing capacity. So for the last year, we have been trying कि अपनी manufacturing capacity बढ़ाएं, and then the more manufacturing capacity we will increase, it will create more jobs, obviously. It will create more export from Pakistan as well. At the same time, it will increase our revenue on the e-commerce side, and then we have some availability, let's say 20 to 30% of our manufacturing capacity, that we can do non-e-commerce export as well. अच्छा, एक बड़ा खतरनाक सवाल करूंगा। Bring it on. यूटोपिया डील्स को कोई अगर compete करना चाहता है, कोई ब्रांड समझता है मेरे पास है इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पूरा सेटअप, एवरीथिंग फॉर एग्जांपल, सो आपको क्या लगता है कि अगर कोई यूटोपिया को compete करने की कोशिश भी कर सकता है, तो क्या होना चाहिए उसके पास? उसके पास एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है मेहनत, right? सही है। Money, as I said, वो तो जरूरी है, and it will take time, depends how you're doing it, right? uh, Again, what I will try to say, I'll answer it differently, कि आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले यूटोपिया नहीं थी, right? लास्ट 30 50 ईयर्स 70 ईयर्स की अगर आप स्टडी करें, तो बहुत सारी कंपनीज आई, $1 million कंपनीज बनी, खत्म हो गई, हर हम्म, उरूज को जवाल है, राइट? हम्म, So don't try to be utopia, try to be better than utopia. Why not? Why you're हम्म, just trying to compete? Or it's good to have a role model. मैं भी छोटा था तो मैं भी देखता था, यार मेरे कजन है, मेरे अंकल हैं, ये इन्होंने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया. It's good to have role model, but या understand your strength or weakness, make your own legacy, right? And I will be happy, I'll be proud कि पाकिस्तान से कोई यूटोपिया क्रॉस कर जाए, ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, ई कॉमर्स में हम साथ सेल्स करना शुरू कर दे. It's a proud moment for everybody, every Pakistani, to have more people, not on Amazon, Walmart, or anything अपना brand launch करके grow कर जाए. But it's for like any business, you have to be consistent. uh uh आपने basically, you have to keep try, right? Keep trying, try different things, adopt, as I said, जो एक छोटा सा, मेरे ख्याल में मैंने भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप स्टॉक आउट हो रहे हो तो आप फॉरेन बायर मंगा लो. You can plan it, right, in the यस, beginning, but that could be your backup plan, or you need to basically keep improving your strategy, and those things will come along the way. तो उसमें बेसिकली आपने डिसहार्ट नहीं होना कि यार मैं स्टॉक आउट हो गया, थिंक अबाउट समथिंग न्यू, ब्रिंग समथिंग न्यू. वीसीज जो आपकी, अगर आप फंड रेजिंग कर रहे हैं अपनी लॉन्चेस के लिए, या फिर 10 में से मे बी सक्सेस होगी, स्टार्टअप्स में 2 की होगी, 8 फेल होती हैं अभी भी यूटोपिया की, आई वुड से. एंड यू वर देयर इन 2018. I think our ratio of launching, and that was a very bad year. We tried to expand very quickly. We brought in like at least hundreds and hundreds of new products from China, mostly on the home products, home side, या, right? And I would say there was success was like 10 15%. Most of या, them were failed. So it's not like आप लोगों को नज़ारा की Utopia माशाल्लाह अभी इतना अच्छा कर रही है, which is really good. But there's a lot of failure stories within Utopia as well, and no, most of people don't know about it. We tried doing mobile apps as well at a time. We and the thing is, focus was not there. So you need to be focused, you need to define, okay, where you want to be in 10 years, and then you divide
into 6 months, 3 months targets, right? And focus on that. There will be a lot of noise, there will be a lot of distraction. अभी हमें लोग कहते हैं कि यार आप ये कर लें, आप इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं, आपको ये छूट है, तो आप सोलर पैनल भी एक्सपोर्ट कर लें या इम्पोर्ट करवा दें या हमारे ये करवा दें. But it's about focus, right? So focus, ROI, and then don't get disheartened if there are challenges. ऑलवेज थिंक लाइक कि अगर चैलेंज कोई आ रहा है तो उसमें से 10 में से या 80% लोग सिर्फ चैलेंज से डर के पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो 2 लोग जो उस चैलेंज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और रिजॉल्व कर जाएंगे, दे विल गो थ्रू एंड दे विल मेक अ नेम. So as an entrepreneur's journey, keep trying. You will see a wall. Success will be either you create a hoop or you go from the side or keep hitting and break the wall. Great. Couple of questions more. एक क्वेश्चन मेरे जहन में अभी आया कि यूटोपिया अमेजोन पे बहुत बड़ा नाम है. क्या यूटोपिया अदर देन अमेजोन अपने एसेट्स बिल्ड कर रहा है, लाइक वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, शॉपिफाई? तो उसमें अगेन फोकस वाली बात, तो 2018 as we tried on new different products, we या tried different marketplaces as well. At that time we tried Walmart, we tried I think there were a few shares and other marketplaces, but we didn't see too much of a ROI or the way they were set up. There were few challenges. There were a specific challenge with Amazon, Walmart. That's why we backed out. Maybe अब वो बेहतर कर रहे हो, but now we are too involved in Amazon कि उसमें हमें टाइम भी नहीं मिल पा रहा. लेकिन recently for the last 6 months, again we are still diversifying, as I said, one on the retail side. Amazon we are exploring again. एंड अगर उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी बनती है और फिजिबिलिटी बनती है तो फॉर श्योर वी ऑलरेडी डू ईबे, राइट? वी हैव आवर ओन B2B website, but yeah, big chunk of it is Amazon, but Amazon is diversified in a way that we have as Amazon UK, Europe, Canada, Amazon Australia a little bit, and we keep trying new area avenues where Amazon expands over there. Great. Any plans to expand into Far East Asia market places like Lazada, Shopee, and also in the Gulf side like Noon, Amazon AE, kind of these लजाडा और places? शॉपी का तो मैं नाम भी नहीं सुना था, अभी सुन रहा हूँ मैं. राइट? तो अगेन इफ दे आर बिग इनफ दैट दे हैव मेक देयर नेम, देन ऑब्वियसली वी विल फॉर श्योर. नोन हो गया आपका मिडिल ईस्ट में, Yeah, दुबई हो गया, सऊदी हो गया. There always we always review so what we do at the beginning of the year, we make our plan for the year, right? And we evaluate if the business, again, for somebody, every company has a different size, so it should make sense. The numbers should make sense. Some initiatives may be really good for somebody of a size of a $10 million company, right? And yeah, maybe that will not make sense for a 700 million or $800 million company, right? So again, you where you want to and where your ROI is, where you want to spend your time most of the time. And basically it needs to tie up with a passion as well. So if there's a, like right now we have started an initiative or a startup, it's called Pallet, right? So driver over there was, again, is electricity is a challenge, energy is a challenge. As a manufacturing unit, home textile manufacturing unit, we need a lot of water and we need a lot of yeah, energy. And even if we get everything from KSC, it's just a big challenge. So we went into alternate energy. Then we started researching. Then we figured out that India and China are doing that, that from the biogas या biofuel, बगास हो गया, आपका काउ डंक हो गया, और भी जो आपका फॉसिल फ्यूल है, उससे हमने फिर मशीनरीज इंपोर्ट की चाइना से. then now we are buying lands and having that startup separately, pallets, where we are doing our own, basically generating energy, and fulfilling about 30 to 50% of our capacity of energy, or I would say जो आपके एनर्जी की कैपेसिटी है, उसके लिए आपको जो चाहिए होता है वो उससे प्रोड्यूस हो रहा है. तो दैट्स अनदर स्टार्टअप. सो and there's a passion over there. I'm involved in expanding that team, but the actual technical team is different. I'm not working with them, but they are doing they're inviting a lot of from all over Pakistan, a lot of industrialists. They visited to see how we are solving that problem, and we are helping them set up their manufacturing, and at the government level we are
engaged as well, and trying to expand it, because if we do it quickly, I mean, it's a game changer, not only for the manufacturing industry, for overall all Pakistan as well, because India and China, they have taken that benefit from that concept 10 years ago, right? We should have, in Wow. Pakistan world, we should have implemented it 10 years ago. Yeah. Amazing. Keep making us proud. This is really amazing. बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं, बट इस लेवल पे सोचा नहीं किसी को भी कि वो पाकिस्तान के लिए इस लेवल पे चीज़ें सोच रहा है. आई नेवर एवर हर्ड ऑफ somebody is doing biofuels or fossil fuels or making the alternates related to that. कुछ लोग काम कर रहे थे कोल गैस के थ्रू एनर्जी बिल्ड करें, और बट आई थिंक पाकिस्तान में काफी अच्छा काम हो रहा है. वन या थिंग which my pet peeve is that everybody talks about negativity. We try to या focus on, and that's not in our hands. So let's try to focus on what's in your hand. You can do good wherever. Try to do good. Sit in the people who are positive, who talk about the future and all that. या There are a lot of good things happening in Pakistan. There, I know there are challenges. There always be, for the last 70 years we have challenges, but there are a lot of good things. There are a lot of good talent, and then just focus on the positives, good initiatives, and then keep doing your part, right, and then leave rest to the Allah. अमेजिंग. अल्लाह ताला ये दिमाग सबको दे, ये पॉजिटिविटी सबको दे, बिकॉज हमारे यहाँ नेगेटिविटी बड़ी आसानी से प्रमोट होती है, बट पॉजिटिविटी के बारे में कहा जाता है कि ये हमने किया है. तो इट्स वेरी rare to see that. Acha, let's take some questions from the audience. We have a question from Hassan. He's asking, does Utopia buy other brands or only all homegrown? All homegrown. So we have, if he's talking about aggregator, or if we have done any M&As, no, we haven't bought any brand. We don't do a resale as well. We have our own registered brands, 5 or 6 registered global brands. उसी में हम product launches करते हैं, and we, if we see new areas, we launch and register new brands. But we haven't acquired any brand or company yet. All right. Okay. Shahid Wasim ka question hai, sir, what are the tactics to deal with a sudden price change, especially when you are new in the category? कंटिन्यूटी में इन्होंने एक और सवाल किया है कि लाइक वी लॉन्च द प्रोडक्ट एंड एवरेज सेलिंग प्राइस इज 29.99, what but after you get live and few times sellers drop their price like 15 to 18 dollars. तो sudden price change को कैसे Okay, so deal? again, you need to understand your market, your customer. There could be few reasons. Somebody could be doing liquidation, right? Bad thing happens with good people. So it could be, again, you need to know that if you're providing a good quality product, what is the landing cost of it, right? And then after marketing, what is a decent प्राइस रियलिस्टिकली. तो अगर उसकी कॉस्ट ही आपको ला के $6 पड़ी है विद FBA एंड डिलीवरी ऑन ऑल दैट, वो 22 या $24 का पड़ता है, दैट्स व्हाई यू आर सेलिंग इट 29.99 टू हैव अ मार्जिन ऑफ $3-4. देन इफ somebody is selling it for 15 or $18 and you have done your due diligence and you're confident on that, then it means that he's selling on loss. So either he has a lot of inventory and then he want to sell 10-20% on, and that could be a strategy of him, and you can adopt that too, to sell it on a very like 50% loss, and then bring it up, create a hype, and then start bringing your so you need to compete with that. I mean, in good, and you can compare in a way that, let's say you have 1,000 reviews, he has only 10 reviews, then you don't need to worry about it, right? Because he's too far ahead. But if you're a bestseller and somebody getting close to you, then obviously you need to reduce your price and apply different strategies to compete with that. कि अपने अपने मार्केट शेयर भी नहीं छोड़ना पड़ता. So it's very relative. You need to understand from the customer perspective as well, what is the realistic price point, right? Again, comforter $30 का ही बिकता है, $100 का ही बिकता है. Depends आपके पीछे क्या ब्रांड का नाम है, क्या quality and things like that. But if some other seller is doing, then you need to understand what could be the reasons and where he is in terms of ranking and you are, and whether you need to be worried about or that or not. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इससे आया, इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, कि यूटोपिया के पास अगर कोई प्रोडक्ट स्लो मूविंग होती है या डेड प्रोडक्ट होती है, मूव ही नहीं हो रही,
यूटोपिया कैसे, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है उसको लिक्विडेट करने की? हम्म। तो ये हमने बड़ा क्लीन चैलेंज अप है। क्लीन अप की, जैसे 2018 में काफ़ी हमारी इन्वेंट्री काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट में इधर वो मूव स्लो हो रही थी, या रिव्यूज़ उनके अच्छे नहीं आए थे, बैड रिव्यूज़ आ गए थे अनफॉर्चुनेटली। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू था, लेट्स बी फेयर अबाउट इट। So we did liquidate it. It's very hard. There are few options, right? If you can afford it, the simplest, quickest option, because focus की बात भी है कि आपने focus उस पे करना है जो आपकी winning product है. एक product हम्म। आपने 6 महीने 12 महीने करके try कर ली, it's a failed product. You don't want to invest more time, more money, and focus on it. Then the easiest way कि Amazon को बोलें dispose कर ले, right? I know उसमें आपको big hit लगेगा, loss होगा, लेकिन again, if I'm that guy and I can afford it, I'll do that because then I can focus on my मेन ब्रेड एंड बटर, राइट? उसके अलावा कि आप उसको क्या कहते हैं, पुल आउट कर लें, और उसमें आप बेसिकली इन्वेंट्री जो है पुल आउट करने के बाद आप रिव्यू करें इन्वेंट्री, एंड देन उसमें जो फिक्स आप कर सकते हैं प्रोडक्ट्स फिक्स करके, या तो रिटेल में सेल कर दें, क्योंकि अमेजोन को वापस भेजना भी सही नहीं है उसी एसिन में, क्योंकि देन दे विल अगेन कस्टमर विल से आप यूज प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एंड देन इट विल jeopardize योर प्रोडक्ट category and reviews and whatnot. And again, if you have connections and you can liquidate, there are wholesalers like in US and in Europe, where you can, and as a last resort, we have done that in the beginning as well, कि हमारे जब ज़्यादा accumulate हो गए थे तो कंटेनर फिल करके फ्रॉम यूएस आप पाकिस्तान मंगा लें और पाकिस्तान में बेच लें उसको. सो दे अगेन एट विच प्राइस पॉइंट यू आर, हाउ मच यू कैन अफोर्ड इट. बेस्ट तो यही है भाई कि उसको अमेजोन से बोलें डिस्पोज करें, और आप फोकस करें उस पर जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट है, इफ यू कैन अफोर्ड इट. All right. Where too many questions now. अस्सलाम वालेकुम फरहान सर, यूटोपिया में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई. मैं तो कहूँगा जॉब के लिए अप्लाई करें. माशाल्लाह, मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसीज एंड वो दे कीप कमिंग. ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है इंटर्नशिप का यूटोपिया में वेयर वी टेक interns. Sometime on the technology side we have, and on the engineering I think we have few MTOs, management trainings. But as a company wide कोई internship का program नहीं है, but we have a lot of job openings, आप apply करें. And then there's another one thing which is the main, I would say, criteria at Utopia, that merit, right? इवन मैं भी कोई प्रोफाइल फॉरवर्ड करता हूँ, मुझे कोई आती है तो मैं अपनी एचआरडी को ही कहता हूँ कि वॉक इट थ्रू द एसओपी, जो एसओपी है हमारी हायरिंग की. तो मेरिट इज द ओनली वे टू गेट इनटू यूटोपिया. Amazing. एक सवाल है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूटोपिया इन पाकिस्तान एंड कैन वी एनरोल इन यूटोपिया फ्रॉम हियर? आई डोंट नो ये एनरोलमेंट किस बात की पूछ रहे हैं, बट हाँ, कोई फ्यूचर प्रोग्राम कैसा तो देख? हमारा ऐसा है नहीं सब्सक्रिप्शन का, या फिर हम कोई कोर्स वगैरह तो नहीं कराते, तो इनरोल का कोई वो तो नहीं है. फ्यूचर तो आई वुड से एज एवरी एंटरप्रेन्योर, आई मीन वी आर पुटिंग आवर एफर्ट to basically, as I said, grow more, do more manufacturing, export more, create more jobs, and then expand as much as we can on the right direction. And the vision is basically create a better image of Pakistan, creating more jobs, creating doing more exports, and at the same time, there's a business advantage as well. Right. Okay, we have more questions here. Sorry. What reason we are also behind almost decades than the other countries to get benefit like Amazon, Fiverr, or any other platform? Is just lack of governance, or be a nation we are not really try to trust at anything new. मैं सवाल थोड़ा मल्टीपल सवाल है इसमें, मैं समझा नहीं. और पॉलिटिकल है तो अगेन, एज आई सेड, फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड. तो बेसिकली इट्स अबाउट के हम क्यों पीछे रह जाते हैं और बाकी मुल्क आगे निकल रहे हैं, इंडिया आगे निकल रहा है, बाकी निकल रहे हैं, हम तो हम पीछे क्यों नहीं पीछे? है, मतलब मैं इसका एक्सेप्ट नहीं करूंगा बेसिकली. नहीं, पीछे अगेन रिलेटिव है, राइट? इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है आपसे, तो अगर आप परसेंटेज निकालें तो दैट्स द थिंग. हाँ, थोड़ा सा चैलेंज हमारा एजुकेशन सेक्टर में है. there's a big challenge on the education sector, so we need to improve education sector. Private sector जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा है, आई वुड से. पब्लिक सेक्टर जो है, या अनफॉर्चुनेटली
समटाइम्स गवर्नमेंट के साथ challenges आते हैं चीज़ों को improve करने में. Private sector wants to do things, but अगर आप इंडिया को भी देखें तो there is a combination of public private sector. There's a lot of project. Reliance को Yeah. देख लें और आप बड़ी companies को देख लें, they work with the government, but mostly projects are initiated from the private sector. So like you, like me, I would encourage everybody to come up with the ideas, make your name, do an initiative, and when you get to a certain level, like we are working with government, Pakistani government, we have a lot of projects, a lot of initiatives that we are working with the government. Then you can work with government and have your say in there, and make policies and changes there, right? So again, depending which angle you are looking at. So पहले तो जहन में रखें ये कि you can do anything and everything. Yeah, you will have challenges. Being in Pakistan, there are different challenges, but you need मैं एक चीज अपनी टीम को कहता हूँ, सक्सेस इज हियर, राइट? यू नीड टू हैव इन योर ब्रेन कि यू कुड बी सक्सेसफुल इफ आई कैन डू इट, इफ जेफ बेजोस कैन डू इट, यू कैन डू इट टू, राइट? हाँ, वहां तक पहुंचने का आपका टाइम ज्यादा हो सकता है, स्ट्रगल ज्यादा हो सकती है, but that's fun is in the journey, right? So enjoy it. Great. Um, Hassan Amin का एक और क्वेश्चन आया दोबारा. How do you see the future of new entrants as third-party sellers on Amazon, keeping in mind available opportunity and competition? तो ऑब्वियसली अमेजोन की clutter हो गई है मार्केट. It's a no brainer because not only Pakistan, India, China, Russia, Europe, again when they started 2012 2014 start में इतना न्यू था, उस वक्त eBay था, हमने भी eBay से स्टार्ट किया था. So there's another story for you guys that we started with eBay, then Amazon came into being, we started on Amazon, फिर Amazon की जब हमारी सेल्स बढ़ गई, eBay की स्लो हो गई, तो we obviously focused on Amazon. तो अगेन उस वक्त डिफरेंट टाइम था. अब आपको अब के हिसाब से करना पड़ेगा, आपको अपने एडवांटेजेस का देखना होगा. जैसे ब्रांड की बात होगी, यू हैव टू हैव अ ब्रांड, register your brand, so you have more features available from Amazon like brand analytics and EBC and the video marketing and all that. If you have if you just do without a brand registered, then you won't have those features and you will be at the disadvantage. तो आपने समझना होगा कि और जो आपका कंपेटिटर है उसके पास क्या फंक्शनैलिटी एंड ऑन द अमेजोन प्लेटफॉर्म कि वो यूटिलाइज करके सक्सेसफुल हो रहा है, एंड यू विल हैव टू compete accordingly with the recent market. But again, Amazon market is still very huge and it's growing. People are still launching products. सक्सेसफुल हो रही है. जैसे हमारा सक्सेस रेट लॉन्चेस का बहुत कम था, लेकिन ओवर द टाइम we have built the recipe and now our success rate could be, I would say easily, if I don't extrapolate, 70 to 80%, right? But we have a very focused group, we have a huge team, very trained skilled team, uh, which does, like they select like thousands of products, then they do cycles and then filter through of different iteration, then it comes into management review, then we discuss, and maybe out of 20,000 products we launch only 25, right? So so you need to understand your competitor, you need to understand your customer, and then what value you're providing to your customer, so your customer will be tempted to buy. Okay, few more questions, फरहान भाई, because काफी सारे सवाल आ रहे हैं. ये बड़ा खतरनाक सवाल है. What is the PPC strategy of Utopia? Tell us some tips. ये मुझे भी नहीं पता. सिंपल आंसर है. नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. अगेन पीपीसी स्ट्रेटजी जो है, इस पे बिडिंग होती है, राइट? तो अगेन जो Yeah. दिखता है वो बिकता है. द गोल इज यू नीड टू बी विजिबल ऑन द फर्स्ट पेज. जब आपने रिसेंटली लॉन्च किया है तो आप क्या बेस्ट सेलर तो नहीं होगा, ऑर्गेनिक रैंक भी नहीं होगा कि आप फर्स्ट पेज पे आओ. यू हैव, और अमेजोन चेंज भी करता रहता है, वो आवर ओन ब्रांड्स आते हैं, अमेजोन के स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं, तो स्पॉन्सर ऐड में आप आ सकते हो पीपीसी के थ्रू. उसमें फिर बिडिंग जो है आप बिड करो, उसमें भी अमेजोन पूल करता है, कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता. तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट करके विजिबिलिटी हो. फर्स्ट यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर, लेट्स से यू सर्च अ कंफर्टर एंड देन यू हैव डन your marketing PPC on comforter keyword, you're in front of the buyer. Now buyer needs to see your pictures, your videos, your price point, your reviews, then they will get in. And then the rest is the history, how your pages are and how your price point is. Excellent. Very well explained. एक और सवाल आ रहा है, वो ये है कि is there any possibility I can buy products from Utopia Pakistan with my brand name and can sell on Amazon UAE in KSA Yeah. market? So as I said, so we have a new initiative uh, where we are expanding
our manufacturing capacities. We have certain defined areas that what we want to export first, and then how much we can export in terms of our capacity. Uh, and that's basically anything, like if you want a white label from China or white label from us. Uh, but there's again, as we have a minimum order quantity and things like that. That's any manufacturer is. So yeah, you can. There's a sales team. You can talk to them. They can share the price sheet. We have a catalog. You can see the catalog, product catalog over there, and then you can place order. Yeah. Perfect. अब्दुल्ला नदीम ने क्वेश्चन किया है लिंक्डइन पे, डज यूटोपिया अलाउज मी टू लिस्टिंग एज आई हैव सीन नंबर ऑफ सेलर्स ऑन यूटोपिया डील्स इन यूएसए मार्केटप्लेस लाइक. Yeah, so as I said, we don't resell, or we don't have a dealer, right? So we don't have a program that's a dealer comes to us के हमें 1,000 यूनिट दे दें और हम आपके नाम से बेचेंगे. हाँ, sure, somebody comes and order 1,000 unit from Amazon and list, because Amazon allows that. So it's not up to us. So if somebody has 1,000 unit, it's a brick and mortar shop and they're listing under our listing, right? Amazon allows that, but I mean, if they undermine, then we have a option through Amazon functionality, being the brand owner, to complain and close their listing. Okay, last question. Huzaifa Salim is asking, I have a question. When we search for towels on Amazon, we see Amazon and Utopia in the first two lines. So, what strategies Utopia applies while competing with Amazon, and what challenges they face while competing with Amazon? Yeah. So after 2018, our biggest competitors in couple of categories, bed sheets, I would say, towels, as he mentioned, was Amazon white label, Amazon basic, right? तो वी केम अप विद फ्यू स्ट्रेटजीज. उसमें आपको लॉस पे भी बेचना पड़ता है, कि आप जब इतने बड़े जाइंट के साथ वो कर रहे होते हो, तो फर्स्ट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बीइंग अडॉप्टेबल, हैविंग इन्वेंट्री, understanding your competitor is very important, and then compete with them. There are few categories, few areas where we had to fight. When I say word fight, means not fight, but like trying different things, and selling on loss as well, for 3 months, 6 months, to keep our bestseller, or take the bestseller back, either from Amazon or other bigger competitors as well. So again, you have to understand at that time, what the competitor is doing, what rank you are on, what your competitor is, and what you need to do to gain back your bestseller, or ranking. Let it be Amazon or somebody else. And why we are on the first two lines, it's like airs and airs of mehnat. Means कि obviously you don't get on first two lines, on the first year. I mean, if you're on the first two lines, the product he's talking about, bed sheets or towels, probably we have 60,000, 80,000, or 100,000 reviews, right? And they get accumulated in 6 years, 8 years, 10 years. So all those, history of selling, and organic ranking, right? It's not a PPC, it's an organic ranking, and that's where the key is. That should be the end goal, to organically get on the first page and first two lines, or get the bestseller organically. Great. Okay, so I think we have covered all the questions. So thank you for answering all the questions very briefly and explained it well. बहुत सारे लोगों को पसंद आया है आपका सेशन, और बहुत सारे लोगों को आपके जवाबात भी पसंद आए हैं. सो फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रही है. सो Good to know. सो थैंक यू सो मच फरहान भाई. इतना मज़ेदार और इंटरेक्टिव सेशन मेरा शायद ही हुआ हो पहले कभी. बहुत मज़े का सेशन था, बिल्कुल बोरिंग नहीं था, और मुझे भी मज़ा आ रहा था. मैं भी थ्रू आउट जाग रहा हूँ, एनर्जेटिक था. सो थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट स्पीकर. थैंक यू सो मच फॉर दिस. और इंशाल्लाह आई बिलीव कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे, और डिफरेंट पॉडकास्ट के different versions लाते रहेंगे इंशाल्लाह for the audience, because you have a very rich experience in the IT industry specifically, और आपका अपने भी काफ़ी सारे initiatives रहे हैं, projects रहे हैं, previous experiences रहे हैं. एक कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आपकी जर्मन वाली स्टोरी भी सुनी जाए. Which I still remember. Sure. With time, पहले कुछ पॉजिटिव इमेज बना लेते हैं, उसके बाद Yes, फिर. yes, हाँ. yes, exactly. So thank you फरहान भाई for your time. माशाल्लाह आपका 1 घंटा हमने ले लिया, 1 घंटे से ज़्यादा ही ले लिया. So I'm have a here great to help. Glad to help if it can help
even a single person out there, Yeah. I'm here to help. Yeah. Thank you. Have a nice day. Take care. Thanks Thank again you, for everyone. inviting me. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.